my dearest students. I hope you all are doing good. I'm good as well. I'm your mentor, Sana ma'am, and I've come here again with another nice, vibrant session on this very important series that is going on. Important vocabulary for IPMAT. As you already know, that we are taking up roots and clusters from your favorite and very popular book, Word Power Made Easy by Norman Lewis. So I'm really eager to know how many of you have been watching all the sessions. If you haven't, please check them out. Sit down with pen and paper, make sure whatever words I share with you, you jot them down. All right, keep revising them. And at the center of all your learning is the very crucial component of application. So you've got to keep on applying using words in your daily language. If you feel कि मैम हम तो use नहीं कर पाते हैं, हम इतनी English बोल नहीं पाते, we normally don't converse in English, you better do that. And if still you find it a challenge, how about making sentences on the words? How about weaving a paragraph using the words that you learn every day? I'm sure इतना तो आप कर ही सकते हैं. So you should do these things, right? No lame excuses. And so today we proceed with our topic of the day. Impactful root words. So I've picked up some root words which are very impactful. They're really nice. Some really common words stem out from them, and hence it's important. And there are some confusing words also that stem out from these roots. तो हम roots करेंगे, उस पे based exercises करेंगे. ठीक है, let's begin. The first word is you. This is a root word, E-U-U. And what does this mean? Okay, this means well, bhala, changa, good. Now I'm sure the words written out here, you're aware of at least some of them. Are you? All right, don't worry. ये देखो, euphonious. आपके लिए कुछ visual clues हैं so that you can guess the words. All right? और जहां जहां पे भी जो भी additional roots लगेंगे ना, मैं वो भी आपको बताती जाऊंगी. ठीक है, तो अपेरेंटली आपको दिख रहा है कि हम सिर्फ 2 रूट्स कर रहे हैं या फिर हम 15 वर्ड्स कर रहे हैं, बट देन आप मल्टीपल रूट्स करते हो क्योंकि मोर एंड मोर रूट्स कीप पॉपिंग आउट फ्रॉम आवर डिस्कशन, है ना? सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वर्ड यूफोनी. अब यहाँ पे यू रोड तो आपको दिख ही रहा है, but at the same time you find another root which is phone या phono, which means sound, as in telephone, microphone. When there is euphony, there is also cacophony. I'll come to cacophony later, but let's talk about euphony right now. So I think you can easily guess. You is well or good, and phono is sound. So euphony is very pleasant sound or something very melodious. Euphonious is melodious. और आपके सामने ये एक इमेज है. इमेज क्यों मैं आपको दिखाती हूँ? So that these can be anchors for your memory. We all are visual learners. Most of us are. When we see an image, it's easy for us to register that word in our mind. Hence the images to aid your memory. Coming over to cacophony. Cacus is a root which means harsh or bad. ठीक है? So cacus plus phono बनता है cacophony. That means noise, unpleasant shrill sounds. Okay? So you know euphony, you even know cacophony today. Euphemism, very interesting. If you don't know euphemism, let me take you to the next slide so you will understand things better. Look at this first. What do you do for a living? The person says, I am between jobs. Instead of saying I am jobless, मैं तो बेली हूँ, मैं तो घर बैठी हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे such a stigma in our society, right? The person says I'm between jobs, shuttling between jobs, actually looking out for a job or probably even jobless. So I am between jobs is actually a euphemism. अब आप समझ गए euphemism क्या होता है? I'll give you more examples. बताइए मुझे जल्दी से यूफेमिज्म क्या होता है? I will help you out.
यू इज अच्छा, राइट? तो कुछ अच्छे से ही रिलेटेड होगा. रूट वर्ड्स की ये ब्यूटी होती है, that if you know the root, you can at least relate to the root. You at least, even if you don't know the exact meaning of a word, you can guess. You would be somewhere close to it. कहते हैं ना, the fruit doesn't fall off far from the tree. तो उसके आसपास अच्छे से ही कुछ रिलेटेड होगा, ये तो आप समझ गए. एंड दिस इज a very polite language which is used so that we don't hurt or offend someone. तो यूफेमिज्म एक तरह से आपकी बहुत ही शुगर कोटेड लैंग्वेज है, ठीक है? इस तरह के वर्ड्स का आप जो इस्तेमाल करते हो सो दैट यू आर नॉट एनी हाउ इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, अनविटिंगली ऑफेंसिव टू एनीबॉडी, दैट इज यूफेमिज्म. आई गिव यू मोर एग्जांपल्स. जैसे कि डाइड, आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि अंकल मर गए. दैट साउंड्स वेरी रूड. हिंदी में भी हम ऐसा ही बोलते हैं कि शांत हो गए, चल बसे, नहीं रहे, परलोक सिधार गए, है ना? तो हम मर गए नहीं बोलते ना, बस यही यूफेमिज्म है. डाइट के बजाय आप बोल रहे हो पास्ड अवे, या फिर आप बोल रहे हो इज नो मोर, है ना? डियरली डिपार्टेड इज अनदर नाइस एक्सप्रेशन फॉर डाइड. जिनोसाइड को जिनोसाइड ना बोल के एथनिक क्लेंजिंग बोलना, दिस इज ऑल्सो यूफेमिज्म. ठीक है ना? यूथनाइज के लिए पुट टू स्लीप. एबॉर्शन की जगह प्रेगनेंसी टर्मिनेशन. सम नाइस वंडरफुल एग्जांपल्स ऑफ यूफेमिज्म. ब्लैक्स को ब्लैक्स ना बोल के पीपल ऑफ कलर बोलना, यूफेमिज्म. ठीक है? सो आई थिंक आपको काफी एग्जाम्पल्स मिल गए हैं, सो यू नो द वर्ड वेल इनफ. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यूलॉजी. यूलॉजी का वर्ब फॉर्म हो जाएगा यूलोजाइज. एंड ये आरसी टोन्स में बहुत ही फेमस है, आपको बहुत दिखेगा यूलोजाइजिंग टोन. सो आई एम श्योर यू ईगर टू नो व्हाट इट इज. अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टडी है क्योंकि लॉजी दिख रहा है, तो यू आर रॉन्ग हियर. एक्चुअली ये बनता है फ्रॉम दिस रूट लोक, जिसका मतलब होता है टू स्पीक. तो ये एलओजी जब आपको दिखेगा ना, ये वो वाला एलओजी है, मतलब इट इज स्पीकिंग. तो लोग यहां पे बना स्पीकिंग, एंड यू हुआ अच्छा या गुड. यूलॉजी मतलब जब आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हो, when you're speaking very well or highly for someone, when you're praising them, when you're eulogizing them, that's eulogy. ठीक है? अक्सर इसको उस वे में भी बोलते थे कि जब कोई when somebody passes away, तो फिर हम उसको याद करके उसके बारे में बोलते हैं ना. कोई कैसा भी इंसान हो, जिंदगी भर हमने उसको कितना ही बुरा भला बोला हो, पर जब वो मर जाता है तो हम उसकी कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही बोल देते हैं. हाँ बहुत अच्छे थे, बोलना पड़ता है, नॉर्म है. आपको खुद लगता है मर गया यार, जैसा भी था अब तो चला गया दुनिया से, तो क्यों उसके बारे में बुरा भला बोलना, है ना? तो जो आप ऑफ द डेड को जब प्रेस कर रहे होते हो ना, यूलॉजी वर्ड है वो. ठीक है? यूलॉजाइज या यूलॉजी इन जनरल कॉनोटेशन आप बोल सकते हो व्हेनेवर यू आर प्रेजिंग समवन. यूथनेशिया तो आपको पता होना ही चाहिए, अगर नहीं पता है तो दैट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग. व्हाट इज यूथनेशिया? मर्सी किलिंग, है ना? देखिए इमेज भी बनाई हुई है, काफी स्कैरी सी लग रही है somehow. तो मर्सी किलिंग बिकॉज इफ देयर समबडी हु इज टर्मिनली इल और उनको अननेसेसरीली लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखना, in their vegetative state as we say, there are absolutely no chances of their recovery and they're groaning and moaning with pain, right? इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें डिसीजन लिया जाता है कि why not give them or administer them some medicines so that they can peacefully pass, okay, pass away. And here आप देखोगे, this is where euthanasia comes into picture. क्यों? क्योंकि ये एक अच्छे मोटिव से किया जाता है. This is not a murder. This is for the betterment of the patient. कई बार पेशेंट के खुद के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ये चाहते हैं, पेशेंट खुद ये चाहता है क्योंकि वो तकलीफ नहीं झेल पा रहा है. ठीक है ना? सो यूथनेशिया इज मर्सी किलिंग. ठीक है? इट इज डन विद अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव इंटेंशन, हेंस दिस वर्ड.
Euphoria. What is euphoria? Euphoric. You must have heard of this word euphoric. So euphoria is a state of extreme elation and bliss. Okay, जब आपको लग रहा है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना, या आजकल पांव जमीन पे नहीं टिकते मेरे. When you think you are on cloud nine, you are feeling on top of the world, right? या आपको जब लग रहा है I am over the moon, इतनी खुश हूं मैं, फूले नहीं हमारी. I'm so ecstatic. I'm so elated. This feeling of rapture in you, that is euphoria. Eupeptic, not a very important word, I would say, but eupeptic or dyspeptic, actually, these are related to digestion. ठीक है. So, you मतलब अच्छा, peptic means digestion. So, when we say eupeptic, so this means it's related to good digestion. ठीक है. Dyspeptic मतलब bad digestion. तो आप ये बोल सकते हो that I am eating this food or this special pill because it's a eupeptic. It aids eupepsia. That way आप इसे बोल सकते हो. ठीक है. All right. या आप किसी बंदे के लिए बोल सकते हो that he is pretty eupeptic. Okay. If you say कि यार कुछ भी खिला लो, पत्थर भी खिला लो, हजम कर लेगा बंदा, तो वो eupeptic है. यहाँ पे आप देखिए एक और, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग निकल के आता है, which is very interesting. If there's somebody जो पूरे टाइम परेशान रहता है with their digestion and stuff like that, obviously life आपकी बहुत बहुत problematic हो जाएगी, because उससे related बहुत सारे ailments हैं. ना सिर्फ tardiness आएगी आपको, fatigue आएगी और दुनिया भर की problems होंगी. On the other hand, if somebody has a very healthy digestion, that person would be active, would be energetic, would be in high spirits. All right. इसीलिए somewhere or the other, good digestion तो एक इसका मतलब होता है, दूसरा होता है cheerful, happy. अगर आप बीमार रहते हो यार और पुअर डाइजेशन की वजह से कुछ खा पी नहीं पा रहे हो, जिंदगी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो तुम खुश तो नहीं रह पाओगे, प्रॉब्लम तो रहेगी, राइट? सो somebody who has is a eupeptic person would definitely be happy and cheerful. Simple. Okay. So हमने words बहुत अच्छे से कर लिए हैं, I believe. And now, without much ado, let's move towards the exercises. Here we go. Come on, mark yes or no. The exercises ko, you should take them very, very seriously because they are the real reinforcement for you. That's how you are able to remember the word and see the application of the word. Let's do it together, class. Is poetry generally euphonious? Is this good sounding? Yes, with its rhyming and its numerous literary devices like assonance and consonants. So many devices, alliteration. It's definitely very pleasant to the ear, right? It rhymes. ठीक है ना? So it is generally euphonious. अच्छे sound करती है? Yes. Does a sincere eulogy indicate one's feeling of admiration? Sincere eulogy है. Somebody is eulogizing you very sincerely. Eulogize करना क्या होता था? किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी को praise करना, appreciate करना. So certainly वो आपको admire तो करते ही है ना? Yes. Answer is yes. Is euphemism intended to express scorn for somebody? Now, do you know scorn? I think scorn is having contempt for someone. ठीक है ना? So, scornful तो आपको पता होगा, when you are being scornful, you are in a way mocking someone or you're expressing your disapproval or disgust for the person. तो euphemism हम इसलिए बोलते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्या? क्योंकि हमें बंदे को इंसल्ट करना होता है, उसको ऑफेंड करना होता है? नहीं, certainly not. So it's a big no. Is euphoria a feeling of malaise? Now, again, this is a negative word and it comes from the root mal, which means evil or simply speaking bad. Certainly not. Again, the answer is no.
Is euthanasia legal in all countries? No. ठीक है, सो ये फिर हो गया। ये कोई आपकी जीके अवेयरनेस नहीं चेक करना चाह रहा था, ये क्वेश्चन ये चेक करना चाह रहा था, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स एंड हैव यू अंडरस्टूड देम प्रॉपर्ली और नॉट? ठीक है, सो आई होप we are clear with this route you that we just did. Let's now move to the another route. Interesting, huh? I'm sure there's so many words written here that you already know. बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन इस पे बनता था, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं या फिर कैन एक्चुअली पोटेंशियली कंफ्यूज यू। ठीक है, द रूट वर्ड इज क्रेड। नाउ हैव अ लुक एट द वर्ड्स लाइक क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ओके, क्रीड, क्रेडेंशियल, ये तो वर्ड्स आपने सीखे हैं, बट शायद कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं दैट यू weren't aware ऑफ। तो कोई बात नहीं, आज इनको अच्छे से समझते हैं और इनकी न्यूएंसेस भी समझते हैं। क्रेड का मतलब क्या होता है? क्रेड मीन्स टू बिलीव। तो क्रेड का मतलब है बिलीव। ओके, क्रेडिबल, ये आई भी एली एज अ सफिक्स, ये क्या बताता है? मोस्टली ये एडजेक्टिव्स होते हैं। क्रेडिबल, टॉकिंग ऑफ सम पर्सन और समथिंग which is believable, dependable, trustworthy, reliable, है ना? तो credible बंदा कौन हो गया? Reliable हो गया, believable हो गया, trustworthy, जिसको आप believe कर सकते हो, जिस पे आप trust कर सकते हो, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। Incredible, in is a negative prefix, तो incredible का मतलब वैसे तो होना चाहिए जिसको आप भरोसा कर ही नहीं सकते, somebody you can't trust. Then why do we say incredible India? What are we trying to say? All right, I'll tell you. Incredible का एक तो मतलब हुआ definitely something which is not reliable or trustworthy. But most of the time हम incredible इस sense में बोलते हैं unbelievable. So if you happen to see your mock scores and you say, oh my God, I got incredible scores, मतलब क्या है? I can't believe my eyes, मेरे को इतने अच्छे नंबर आ गए, या God forbid इतने गंदे नंबर आ गए, भी हो सकते, यकीन नहीं आ रहा मुझे। When I say incredible India, we believe that and that is the truth. जो vastness है, जो richness है हमारी country में in terms of geography, culture, languages, creeds, ठीक है, उसके सेंस में, and the beautiful jaw-dropping scenery that we have around the country, this makes India so incredible. You get a feeling, oh my God, there's so much diversity and it's so beautiful, can't believe it. ऐसी जगह है भी क्या? That is why we say incredible India, right? So I'm sure you've understood the word really well. Credulous, many students don't know about this word. Let's understand what is credulous. Credulous का मतलब होता है believing. Now, what do you mean by believing? Somebody who very easily believes. This is that सीधा साधा बंदा या बंदी whatever, जो किसी की भी बातों में आ जाए। मतलब ये लोग बहुत ही ज्यादा सीधे होते हैं, जिसको कहते हैं ना गऊ है बिल्कुल, that way, ठीक है ना, भोले भाले लोग, credulous. Incredulous is certainly the opposite of it. Someone who cannot be taken for a ride, who is sharp enough, who understands things, right? Okay. So incredulous, I hope clear है. Credit, of course. क्रेडिट एक तो जो हम कॉमर्स में क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं वो भी क्रेडिट से आता है। आप किसी को क्रेडिट तभी देते हो व्हेन यू बिलीव द पर्सन। आपको पता है द पर्सन इज अ रोग एंड इज अ ठग, यू वोंट गिव हिम अ सिंगल पेनी, वुड यू? तो क्रेडिट ट्रस्ट पे दिया जाता है। एक और मतलब क्रेडिट का जो हम कहते हैं शेयरिंग द क्रेडिट्स, है ना, या फिर आप किसी को क्रेडिट देते हो किसी चीज का, ठीक है, बिकॉज यू बिलीव दैट पर्सन हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली एंड डिजर्व्स एन अप्रिसिएशन, है ना, सो द क्रेडिट गोज टू माय टीम। तो हियर ऑफ कोर्स व्हाट एम आई ट्राइंग टू से,
that I trust them, that they have done a wonderful job. Okay, so that in a way is a credit. और इसी से बना the word creditable. Look at this. This is a creditable score, except for the fact you didn't count half your strokes. So, okay. So creditable is something which is praiseworthy. ठीक है, क्रेडिट से ही बना. आप जिसको क्रेडिट दोगे, आप क्रेडिटेबल बोल रहे हो किसी चीज को, तो वो बहुत ही बिलीवेबल डिपेंडेबल परफॉर्मर है, वो प्रेज वर्दी है, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, उसकी तारीफ होना चाहिए. ठीक है, एंड डेफिनेटली आप उस पर भरोसा करते हो दैट द पर्सन विल नेवर लेट यू डाउन इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटीज एंड competencies and contribution. So such a person would be creditable, a performance can be creditable. Any, you can use it with a thing or with a person. Finally, a few more. Credo. Credo is your belief system. Most of the time, एक बंदे के इंडिविजुअल जो हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना, उसके लिए बोलते हैं द गाइडिंग प्रिंसिपल्स. हम सब में कुछ ना कुछ उसूल तो होते हैं ना कोई वैल्यू सिस्टम होता है हमारा. ठीक है, द एथिक्स दैट वी हैव, the moral compass that we have and that we follow, right? ये है आपका credo. Credence. Credence is again belief. Simply. For example, you say, I never give credence to whatever is written in this particular magazine. I think this is all hoax. ठीक है, not really good journalism. So I don't give credence to it. मतलब मैं उसको ट्रस्ट नहीं करती, मैं उसको बिलीव नहीं करती. क्रेडेंस का मतलब हो गया सिंपली बिलीफ. You can otherwise use it affirmatively also, right? For example, the evidence leads credence to the theory. ठीक है ना, तो एविडेंस है वो ऐड कर रहा है, एड्स क्रेडेंस टू द थियोरी. ये थियोरी है, थोड़ी हवाई बातें लग रही थी हमको, लेकिन ये एविडेंस ने क्या कर दिया, उसमें क्रेडेंस ऐड कर दिया, मतलब बिलीवेबल बना दिया उस थियोरी को. क्रेडेंशियल, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं क्रेडेंशियल होते हैं. कोई कैसे मान लेगा कि मैं सना जाफरी हूं? भाई मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड है ना. सो द पॉइंट इज के हम अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं, नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्स, इन अ ब्रॉड सेंस भी आप ले सकते हैं. एनीथिंग दैट प्रूव्स that you are a very authentic and genuine person, and that adds to your credibility would be a credential. Creed is caste and creed जैसे हम बोलते हैं, मोस्टली कलेक्टिवली इस वर्ड का इस्तेमाल होता है. रिलीजियस बिलीव्स के आसपास ये वर्ड रिवॉल्व कर रहा है. तो देखिए आपके लिए क्रीड का मैंने एक पिक्चर भी किया है, सो दैट यू आर ऑब्वियसली much more comfortable with it. Okay, so there's so many different creeds that are living in this particular country together. So creed is about the religious beliefs of people, or in fact इसको collectively as a religious unit भी माना जा सकता है. So we are done with this route, and I believe कुछ अच्छे words जो आपने सीखे, जो शायद आपको नहीं पता होंगे, would be credulous, incredulous, difference between credo and creed. In numerous instances, they can be used interchangeably, but in general, credo is more of a personal thing, a personal belief system or values that you have, and creed would be collectively and more inclined to the religious aspect of it. And credence का use आपने देखा. So finally, exercise time, kids. हाँ, ये थोड़ी सी इमेज डार्क है, आपको ये दिख नहीं रहा होगा शायद क्लियरली, बट ये ऋतिक रोशन है फ्रॉम द मूवी क्रिश. माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है. Okay, you remember that scene, and this meme got really popular, huh? So is this fellow credulous or incredulous? बताइए मुझे जल्दी से. Write it in the comment sections, please. Is this credulous or incredulous? And finally, exercise. कुछ words आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, and fill in the blanks है. Take a moment, quickly solve these. Fill in these blanks with the right word, the most suitable word. Be very careful, and kindly share your answers in the comments.
I'll be looking forward to your responses, kids. Are we done? Okay, let's do this together. Don't tell me this dash story, you are cooking it up. जब भी हम कहते हैं you're cooking it up, that means हम कोई कहानी बना रहे हैं, है ना? तो obviously ये story कैसी होगी? ये अनबिलीवेबल स्टोरी है जिसपे हमें भरोसा नहीं हो रहा, तो ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए? इनक्रेडिबल. We all live by some dash. So I would say we all live by some values. We all live by some credo or credos. It can be detrimental for a person to be dash in today's world. Now, if you don't understand the word detrimental, तो दिक्कत हो जाएगी, boss. Detrimental is dangerous, deleterious, detrimental, dangerous. आज की दुनिया में अगर आप डैश हो तो खतरनाक है. क्या क्या होना चाहिए बताइए? ऑब्वियसली क्रेड्यूलस, है ना? तुम एकदम सीधे साधे हो, ठीक? दिक्कत हो जाएगी ना, लोग तो ठग लेंगे तुमको, उल्लू बना देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, राइट? लिखी देती हूं मैं सारे वर्ड्स so that there's no confusion whatsoever. A.R. Rahman is indeed a dash performer, क्रेडिटेबल परफॉर्मर, है ना? प्रेज वर्दी, उनका म्यूजिक यूनिक है और वो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड म्यूजिशियंस हैं ऑफ आवर कंट्री. आई यूजुअली डोंट गिव डैश टू व्हाट ही सेज. I don't believe to what he says. I don't believe what he says, right? I don't give credence. जब हम वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं वहां कहानी खत्म नहीं होती. हमें वर्ड्स का यूसेज अच्छे से आना चाहिए. एंड आई होप कि आज आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए. सो क्लास बी विद अस. डोंट मिस अ सिंगल सेशन. Like, share and subscribe. Thank you so much. That's all for today.